Hello and assalamu alaikum and very good evening to all of you. You are watching your Shahid Sir's channel, Shahid Sir's physics class. So today our topic is, you can see on the board very clearly, formation of images by convex lens. तो yesterday we are done with the rules. तो वो कौन से ऐसे rules है जो हमें मदद देती है किनको बनाने में, images को बनाने में, जो रे डायग्राम है उनको बनाने में मदद देती है. तो आज हम बहुत सारे केसेस यहाँ पे करेंगे. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यस्टरडे दैट देयर आर 6 केसेस और आज हम वो 6 के 6 केसेस करने वाले हैं. सो सिटे विद योर शाहिद सर एंड हियर वी आर. नाउ द केस नंबर फर्स्ट एज यू सी, बट बिफोर आई विल टेक द केसेस, एक जनरल फिगर आपको याद रखनी है जो मैंने कल भी आपको बोला था. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा. अगर आप ये सब नहीं जानोगे तो आपको फिगर ड्रा करने में प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है बेटा. तो चलते हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की. तो कॉनकेव लेंस की हम बात नहीं करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस. तो हम पहले ड्रा करेंगे. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. वेरी गुड. वंस अगेन, थिक इन द middle but thin at the edges. This is optical center and this is the principal axis. वहीं कैसे सोरे ज़बानी याद आसन. ठीक है. Now my dear, as you see, the principal axis passes through the optical center. So I will denote it with the letter O. Now this is the first focal length. I denote it by F1. And then it is twice of focal length. Denote this by 2f1. Here it is the second focus. Denote this as f2. And then you have double of focus 2. Denote this to f2. Always remember. तो जितने भी केसेस आपको बनाने हैं ना बेटा, तो पहले आप इसको याद रखेंगे. इस वाले साइड में f1 twice f1, f2 twice f2, ये आपको ज़बानी याद रखना है. बिल्कुल. यू हैव टू रिमेंबर दिस माय डियर. नाउ कमिंग टू द केसेस. व्हाट इज केस नंबर फर्स्ट? जल्दी जल्दी से हम आपको बताएंगे. या तो इमेज वर्चुअल आएगी या तो इमेज रियल आएगी. देखो, वर्चुअल इमेज सेम साइड, जिस साइड पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे, अगर उसी साइड इमेज बन गई तो वो वर्चुअल है. लेकिन अगर आपकी इमेज लेंस के दूसरे साइड पे आती है, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज. दैट्स कॉल्ड रियल. लेट अस सी कि इमेज मिरर्स सेम साइड आती है कि दूसरे साइड से आती है. तो चलते हैं बेटा. हियर वी गो. व्हाट इज द फर्स्ट केस माय डियर? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O. व्हाट इज O? इट इज ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 फर्स्ट फोकल लेंथ. तो हियर इज द ऑब्जेक्ट. सो आई विल राइट हियर ऑब्जेक्ट. लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट इज AB. तो माय डियर, ऑलवेज रिमेंबर 2 rays फ्रॉम द हेड. 2 rays फ्रॉम द हेड. याद करो जिस तरह हमने कनकेव मिरर में मतलब रे डायग्राम्स बनाई थी, बिल्कुल ऐसे ही करना है यहां पे. दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. एज यू कैन सी, दिस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल पास थ्रू द फोकस. दिस इज फर्स्ट वन. And second one, my dear, it will pass through the center of curvature. Sorry, it will pass through optical center. अगर हम इन दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे ना बेटा, तो ये नहीं मिलेंगे. तो बट व्हेन यू एक्सटेंड दिस लाइक दिस एंड व्हेन यू एक्सटेंड लाइक दिस हियर, ओके, तो इस साइड मिलेगी. तो हियर इट इज. नाउ यू कैन सी माय डियर, अभी मैंने कहा अगर ऑब्जेक्ट जिस साइड पे हम रखते हैं, अगर उसी साइड इमेज बन गई तो इसको हम कहेंगे वर्चुअल. अगर ये दूसरे साइड पे आ गई तो इसको कहते हैं रियल. तो आप खुद ही बताओ बेटा, आपकी इमेज कहां पे बनी? ऑब्जेक्ट के पीछे बनी, सेम साइड. सो द इमेज इज वर्चुअल. वर्चुअल इमेज की क्या खासियत होती है? इट इज ऑलवेज इरेक्ट. इट इज ऑलवेज इरेक्ट. व्हाट? बट यहां पे अगर हम देखेंगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट? इट इज स्मॉल, बट हियर इमेज हम लिखेंगे A', B'. तो इट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो थोड़ा समरी लिखेंगे. तो हम यहां पे लिखेंगे, शाबाश, जल्दी जल्दी से, व्हेन द ऑब्जेक्ट is
placed in between O and F1. The nature of image is. नंबर 1 जल्दी से बताएंगे सर. Image is erect, image is virtual, that is same side, and number 3, it is greater than the size of the object, greater than the size of object. I hope it is clear to you. It is very simple. I have already told you the rules that you have to follow. If you know the rules, you can construct the ray diagram. If you don't know the rules, you cannot construct the diagram. Let me tell you. Okay, this is the case number first. It is done. अब केस नंबर फर्स्ट को हमने कहाँ पे रखा था? O and F1 के बीच में. तो दूसरा हम रखेंगे F1 पे. देखते हैं इमेज कैसी आएगी. हाँ, one point. It is the only case where you can find images virtual. Rest of the 5 cases that you see, all images will be real. This is great news for you. Okay. Now you have to remember only one case where you can find the image virtual. That is case number first, when the object is placed between O and F1. Now my dear, if the object, now second point, when the object is at F1. Okay, jaldi se beta. This is convex lens, this is optical center, here it is the principal axis, here it is F1, it is twice of F1, it is F2, and here it is twice F2. Now the where is the object को कहाँ पे रखना है भैया? It is on F1. तो F1 parallel to the principal axis and it will pass through the focus. This is rule number 1. And then see this, yes. So here they are parallel. So rays, they will meet. But I don't know where they will meet. The image will be enlarged. And when the image is enlarged, my dear, it is called magnified. And when the image is small, it is called diminished. I have already told you all these things, terminologies. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं image is formed at infinity. But on what side? It is on the other side of the lens. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं when the object is at F1, the image is number first point, sir, real. Why real? Image is formed on the other side of the lens. That is why it is real. Otherwise it was virtual. अगर ये same side of the object आता, ठीक है? And one more point, it is highly, no. Real means inverted. Very good. Inverted. Virtual means erect. ये तो आपको पता ही है. And images formed at infinity. Infinity को हम इस तरह से लिख सकते हैं. You know this. And image is highly magnified. Case number 2 is clear. Case number 2 is clear. Very simple. देखो, अगर ऐसा आप एग्जाम में बनाते हो तो you will get 5 out of 5. 5 मार्क्स इन 4 पॉइंट्स को, इस डायग्राम को, है ना सिंपल. दिस इज वेरी सिंपल माय डियर. तो चलते हैं केस नंबर 3 पे. जल्दी से हम केस नंबर 3 पे चलते हैं. ओके, केस नंबर 3. हाँ, what is case number 3 now? When the object is in between F1 and twice F1, if I am not wrong, F1 and twice F1. See, again, here we are. This is what? Convex lens. This is optical center and this is the principal axis. हाँ बेटा, एक बात तो मैं भूल ही गया. तो जितनी डिस्टेंस आप 0 to F1 रखोगे ना, उतनी ही डिस्टेंस आपको F1 to twice F1 रखनी है. पॉइंट नंबर 1. जितनी डिस्टेंस आप 0 to F2 रखोगे, उतनी ही डिस्टेंस आप F2 to twice F2 भी रखनी है. इज दिस क्लियर? वेरी गुड.
Now the case number third is when the object is placed between f1 and twice f1. तो here, हाँ, यहां पे नहीं रखना है, बिल्कुल बीच में रखना है. Okay, it is parallel to the principal axis and it will pass through the focus. Right. What about the second one? Second one like this. Yes. So image is formed, shabash, behind twice f2. Behind twice f2. खुद ही summary आप लिखो. Sir, when the object is placed between f1 and twice f1, the image is number one. It is real. It is inverted. It is beyond twice f2. Very good. What is the location of the image? Location of the image is twice f2. Remember, my dear. And what about the size? The size of the object is this and the size of the image is this. Is it enlarged? Exactly, it is enlarged. यहाँ पे हम लिखेंगे number one, when the object is between f1 and twice f1, the image is formed behind twice f2. Number one, image is real and inverted. Real and inverted. I hope you are getting it all. Okay. And number third, it is greater than the size of object. Okay, case number 3 is done. तो चलते हैं बेटा जल्दी से केस नंबर 4 पे आते हैं. तो केस नंबर 4 क्या बनेगा? एग्जैक्टली ट्वाइस f1. यस. सो जल्दी से हम आपको बताएंगे केस नंबर 4b. व्हाट इज केस नंबर 4? When the object is placed at twice f1. Twice f1. Yes. So here it is convex lens. It is optical center. This is the principal axis. This is f1. This is twice f1. This is f2. It is twice f2. Okay, my dear, here it is object. So दो रेज को आपने पास करनी है. One is parallel to the principal axis. As per the rule, it will pass through the focus. Good. And second ray will come. It will pass undeviated. Yes, exactly on twice f1. Exactly on twice f1. देखो, जब हमने कनकेव मिरर में पढ़ा था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम रखते थे ना तो बिल्कुल इमेज बराबर बनती थी एज पर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. दैट इज वाई मैंने यहां पे थोड़ा चिल्ला के बोला यस, क्योंकि मुझे देखना था अगर हम ट्वाइस f1 पे रखते यहां पे भी आपकी इमेज कहां पे आनी है? ट्वाइस f1. और अगर साइज ऑफ द इमेज 2 सेंटीमीटर है यहां पे भी 2 सेंटीमीटर आनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये वाला अक्सर एग्जाम में आ जाता है. नेम द केस वेयर द ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू द इमेज साइज. याद रखना, इट इज केस नंबर 4. आई रिपीट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ट्वाइस f1, at that time is image is also formed on the twice f1 but on the other side, and the size of the image is equal to the size of the object. You please remember. So what you will write now? You will write now when the object is at twice f1, image is formed at twice f2. On the other side, image is real and is inverted, and yes, same size. This is very important. Same size. Got my point? So this is case number 4. Now coming to when the object is beyond twice f1. Yes, is beyond twice f1. Okay. So when the object is beyond twice f1, at that time what will be the nature of the object? Sorry, nature of the image क्या होगा उस time? Yes. So here we go.
What is this? Sir, it is convex lens. This is optical center. This is the principal axis. This is F1. This is twice F1, where you have to place the object beyond twice F1. ये मैंने लिखा ना, beyond twice F1. तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है? F2 and it is twice F2. चलते बेटा, first ray parallel to the principal axis will pass through the focus, right? And second one, yes, exactly, the image is formed in between F2 and twice F2. कमेंट में जरूर लिखिएगा, इसकी जो समरी है वो आप कमेंट में लिखिएगा, जिसको आएगा वो लिखेगा. Okay, so I hope it is clear. The case number 5 is also clear. Now we have the last case. हाँ, यहाँ पे मैं नहीं, ये वाला जो है, इसकी जो समरी है, इसका जो नेचर है, आप वो कमेंट में जरूर बताना है. ओके, तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट हियर. नाउ द केस नंबर 6. केस नंबर 6, व्हेन द ऑब्जेक्ट, आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इस तरह आप लिख सकते हैं, ये इस तरह लिख सकते हैं. केस नंबर 3, when the object is anywhere, that means infinity, the rays will come parallel like this. एक लाइट ऐसे आनी है तो वो कहाँ जाएगी? सर फोकस से. एक लाइट यहाँ से आएगी, वो कहाँ जाएगी? सर फोकस से. तो this is when the object is at infinity. Infinity means the rays will be parallel. हाँ. केस नंबर 2 याद करो, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इन्फिनिटी. नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज कहां से होगी भाई? इट विल बी ऑन फोकस. द इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड, मतलब वारिया लकट है, इमेज विल बी वेरी डिमिनिश्ड, एंड वो रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी. ये सब तो आपको पता ही है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द केसेस. इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to comment. Okay, thank you, stay blessed and keep always learning. Thank you.